Yes. So see here now. Now this figure will resemble with the figure which I have shown you for mod 1. But what is the difference? I want you to see the minute difference. See the minute difference. The minute difference is about the ninth bit. Can you see here the ninth bit? Can you see the ninth bit? Mod 1 में था सिर्फ stop bit और stop bit. Stop bit and start bit. And that two bits will be appended with the 8 bit of data. But here there is one more bit that is called as a 9th bit. इसलिए इसका डिस्क्रिप्शन में आपने क्या लिखा था? 9 bit UART. 9 bit UART. So what is this 9 bit now? This is a parity bit. मैंने बताया था. While explaining you the asynchronous communication, मैंने बताया था वहां पे कि हमारा स्टार्ट बिट रहेगा, स्टॉप बिट रहेगा, और अगर हमें चाहिए और एक बिट, that will be a parity bit, that will be before your stop bit. Before your stop bit. So can you see the stop bit? 9 bit. Okay, 9 bit. So see here now, in the transmission section में देखो अभी आपको डेटा ट्रांसमिट करना है, तो that will be available in the SBUF. Now that SBUF data, that is the 8 bit data, will be appended by the stop bit and the start bit and 8 bit. आप बोलोगे कि सर अभी ये जो 9th bit है वो कहाँ पे है? That 9th bit will be copied in TB8. Can you see here TB8? TB8. Okay, if you see the SCON register, you have a TB8. I think that is a 4th bit. So that 4th bit will have the 9th bit. Will have the 9th bit. Now once you have that, can you see the frame format? This is a start bit followed by your 8 bit data. Then you have TB8. Then you have stop bit. And this is in synchronization. In the clock. Okay, clock. And that it is a 11 bit parallel to serial communication. पहले कितना था? 10 bits थे. Now it is 11 bit parallel to serial conversion. Okay, and then it is given out. Same thing, everything remains the same. Here also everything remains the same, but can you see the TB8, the bit which we have received now? Now that bit will be copied into RB8, because RB8 is for receiving the 9th bit and TB8 is for transmitting the 9th bit. So while transmission, your 9th bit will be copied in TB8, and after receiving that 9th bit will be copied in RB8. So that is the only difference you have. That is the only difference you have. Okay, and everything remains the same. So do you have any questions related with this? This is as simple as it is. Once you have understood the mod 1, you will be able to understand the mod 2 also. You will be able to understand the mod 2 also. So shall we proceed further? Yes, sir. Yes. So this is about your mod 2. This is about the mod 2. Okay. So this is about the mod 2. You can write down one sentence about the mod 2. Please write down. Write down. The baud rate is programmable. The baud rate is programmable to either, it is programmable to either 1/32, 1/32 or 1/64, 1/32 or 1/64 of the oscillator frequency, and depends upon the S mod bit of PCON register, and depends upon S mod, SMOD, all capital letters, of PCON register, PCON register हमने नहीं लिया अब तक. मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि S mod bit PCON register में होता है. वो S mod bit अगर 1 है तो क्या होता है, और S mod अगर 0 है तो क्या होता है. ओके, वो चीज मैं आपको और यहाँ पे बताऊंगा. आपने क्या लिखा? एंड डिपेंड्स अपॉन द S mod bit of PCON register, and write down the equation for baud rate.
Write down the equation for baud rate. Baud rate equals to baud rate equals to 2 to the power of S mod. Write down. Baud rate equals to 2 to the power of S mod. 2 to the power of S mod. एक बेटा. Okay, write down. Baud rate is equals to 2 to the power of S mod divided by 64. Divided by 64. Divided by 64. Listen here. 2 to the power of S mod divided by 64. ये सब एक ब्रैकेट में. 2 to the power of S mod divided by 64. ये एक ब्रैकेट में. ब्रैकेट के बाहर लिखो बाद में. लिखो मत. मल्टीप्लाई बाय oscillator frequency multiplied by oscillator frequency multiplied by oscillator frequency multiplied by oscillator frequency. Okay, now let me tell you something more about the S mod. Now let me tell you something about the S mod. See here now, whenever you talk about the S mod, all of you pay attention. Whenever you talk about the S mod, I want you to see this figure. आपके पास होंगे या फिर imagine करो, and you see this figure, and you will come to know one thing. What is that thing? See here, all of you. In this figure, you know that when your S mod is equals to 0, the frequency will be divided by 32, and when S mod is equals to 1, the frequency will be divided by 16. Now, when it is divided by 32, you know that the output of when it is divided by 32, the frequency which you will get is 28800. And when you are dividing by 16, the output of that frequency you will get at 57600. And if you see carefully, 28800 and 57600, what difference do you see in between these two frequencies? I want the answer from you. I want you to refer this figure, which is not seen here, but I think you have that figure. What I am saying that when you divide by 32, you have one frequency, and when you divide by 16, you have one frequency. Can you see the difference between both the frequencies? What is that difference? What is the difference? Any one of you? Okay, I will give you the difference. If you see carefully, when it is divided by 16, you have 57600, which is exactly the double of when you divide by 32. So can I say 57600 is exactly a double of 28800. 28800. I want the acknowledgement from your side कि मैंने जो बताया वो समझा के. हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं. I will once again explain you. समझा सर. हाँ, मुझे ये बताना था आपको कि जब आप डिवाइडेड बाय 16 करते हो, आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है 57600, वो जो फ्रीक्वेंसी है वो एग्जैक्टली डबल है. किसकी डबल है? जब आप डिवाइडेड बाय 32 करने के बाद जो आपको फ्रीक्वेंसी आती है आउटपुट 28800 वाली, उसका वो एग्जैक्टली डबल है. इसका मतलब 57600 इज एग्जैक्टली डबल ऑफ 28800. अभी मैं जो कमेंट करने वाला हूँ वो समझो, वो क्या कमेंट है. मैं अभी जो कमेंट करने वाला हूँ अभी वो समझो मैं क्या है. एंड यू टेल मी वेदर वॉट एवर आई एम सेइंग इज राइट और रॉन्ग. whenever I want to double the frequency, whenever I want to double the sorry, don't say double the, you can say whenever I want to double the baud rate, whenever I want to double the baud rate, you can double the baud rate by
making S mod is equals to 1. Do you agree with that? Again, I'm repeating. If you want to double the baud rate, you can double the baud rate just by making S mod is equals to 1. S mod is equals to 1. S mod is equals to. For example, all of you pay attention here now. On the screen. Now, मुझे अगर 9600 baud rate चाहिए, 9600 baud rate चाहिए, तो आपने S mod 0 किया है, लेकिन मुझे 9600 का डबल चाहिए. What is the double of 9600? It is 19200. Yes or no? It is 19200. Someone of you please acknowledge. हाँ. Yes, sir. तो मुझे बात बताओ, अगर मुझे baud rate को डबल करना है, तो मैं S mod अगर 1 करता हूं तो वो डबल हो जाएगा. Do you agree or not? You can try this. When my S mod is equals to 1, ये देखो ऊपर का इक्वेशन, जब मेरा S mod is equals to 0 है, तो 2 to the power of 0 will become 1. लेकिन जब मेरा S mod is equals to 1 है, तो 2 तो आएगा ना. So 2 multiply इसका मतलब डबल. 2 multiply is nothing but डबल. अगर 3 multiply रहता तो थ्राइस, अगर 4 multiply रहता तो 4 times. लेकिन S mod अगर 1 है, तो it is 2 times. So can I say, when your S mod is equals to 1, actually you are doubling the baud rate. So by keeping S mod is equals to 1, you can double the baud rate. Now come to the equation जो आपने लिखा है, अभी जो लिखा है मैंने आपको जो बताया कि लिखो mod 2 के लिए. मुझे बात बताओ, baud rate का आपने इक्वेशन लिखा 2 to the power of S mod divided by 64 into oscillator frequency. उसके पहले आपने सेंटेंस में क्या लिखा था कि baud rate क्या is programmable to either 1/32 और 1/64. ओके, आप वो इक्वेशन देखो जो आपने लिखा है. मुझे बात बताओ, जब आपका S mod अगर 0 है, तो 2 to the power of 0 will give you 1. So can I say it is nothing but it is 1/64 of oscillator frequency? Yes or no? Yes. Can I say? हाँ, जब S mod is equals to 0 है, 2 to the power of 0 is 1. So can I say it is 1/64 of oscillator frequency? Yes. Now your S mod is equals to 1. Now when S mod is equals to 1, 2 to the power of 1 is 2. So 2 divided by 64 कितना? 2 divided by 64 कितना? 1/32. Yes. Can you see here 1/32 divided by oscillator frequency? So 1/32 divided by oscillator frequency. मुझे बात बताओ, जब मेरा S mod 0 था, जो मेरा baud rate मिला मुझे, और अभी मैंने S mod जब 1 रखा, जो मुझे baud rate मिला, don't you think when S mod is equals to 1, actually you are doubling the frequency? Yes or no? Yes, sir. Yes. So अगर आपको वाइवा में पूछा जाता है या फिर कहीं भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि how do you double the baud rate, you will say by just S mod is equals to 1, I can double the baud rate. And I have given you the justification, I have given you the proof. Okay, so always remember S mod is important, which will double the baud rate, which will use to double the baud rate. If it is okay, shall we proceed further? Yes or no? Yes, sir. Yes. Okay. Now the last one is remaining, that is mod 3. तो mod 3 कुछ भी नहीं है. mod 3 में सिर्फ आपको एक सेंटेंस लिखना है. एक सेंटेंस लिखो mod 3 के लिए. Write down mod 3 and write down one sentence. Mod 3 is identical to mod 2. Mod 3 is identical to mod 2, except that the baud rate is determined as in mod 1. Baud rate is determined as in mod 1. mod 1 में हमने वही तो किया था कि baud rate आपका वेरिएबल था and set by timer 1. तो ये जो फिगर है ना, वही ये फिगर है, ये जो टॉप वाली फिगर है, और कैलकुलेशन जो है वो वैसी रहने वाली इन mod 3. ओके, लेकिन और एक डिफरेंस है.
full stop. In mod 3, 11 bits are transmitted or received. In mod 3, 11 bits are transmitted or received. mod 2 में वही था, 11 बिट्स ही थे, और mod 3 में भी 11 बिट्स ही है, सिर्फ डिफरेंस है बॉड रेट जनरेशन का. तो इन mod 3 में आपने क्या लिखा? इन mod 3 11 bits are transmitted or received, comma 1 start bit, comma 8 data bits, comma 9 programmable bit, आपको चाहिए तो ब्रैकेट में लिखो पैरिटी बिट. ये हो गए टोटल 10. लास्ट वाला जो बाकी है, एंड 1 स्टॉप बिट, एंड 1 स्टॉप बिट, एंड 1 स्टॉप बिट, एंड 1 स्टॉप बिट, एंड 1 स्टॉप बिट. आपने क्या लिखा? 1 स्टार्ट बिट, 8 डेटा बिट्स, 1 पैरिटी बिट, that is 9 bit, and 1 stop bit. So you will have total 9 bits, sorry 11 bits. You will have 11 bits. So mod 2 में अभी हम 11 bits ही ट्रांसमिट कर रहे थे, mod 3 में भी हम 11 bits ट्रांसमिट कर रहे हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि बॉड रेट जो जनरेशन होगा दैट विल बी वेरिएबल, जो हमने देखा था mod 1 में, और वही सेम यहाँ पे भी हम वही बॉड रेट यूज कर सकते हैं, वेरिएबल वाला. I think everything is clear now. Do you have any questions? Any questions you have related with this? So shall we proceed? If you don't have any questions. Yes, sir. Okay. अभी मैंने आपको SBUF सिखा दिया, मैंने आपको SCON बता दिया. SCON में मैंने आपको आपके 4 मोड्स भी पढ़ा दिए. मैंने SMOD PCON रजिस्टर में होता है वो बताया. SMOD का इंपॉर्टेंस मैंने बताया. बॉड रेट वेरिएबल जो होते हैं तो वेरिएबल कैसे मिलना है वो भी मैंने आपको बताया. उसमें TH1 इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया. TH1 में हम टाइमर में पढ़ेंगे, ये सब मैंने बताया. अभी एक ही स्पेशल फंक्शन रजिस्टर बाकी है, वो है PCON रजिस्टर, और PCON रजिस्टर हम कल लेंगे. Tomorrow I will be taking 2 hour session from 2:30 to 4:30. Everyone should be present. Tomorrow's lecture is important. Okay, so 2:30 to 4:30. हाँ, so ये कल के लेक्चर में मैं PCON पढ़ाऊंगा. ओके, तो अभी मैं आपको डायरेक्टली क्या पढ़ाऊंगा? टाइमर रजिस्टर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा. टाइमर, the special function registers which are associated with the timers. Okay, now we are going to understand the timer. Now on the fresh page, please write down special function registers related with the timer. Special function registers related with the timer. Special function registers related with the timer. Now we will see the special function registers which are related with the timer. Just a minute, मैं आपको फिगर बताऊंगा, then I will explain you. Yes, so you have written on the fresh page now special function registers associated with the timers. So now we are going to understand the special function registers which are related with the timers. So for that I will show you the figure.
Yes. Can you see the figure on the screen? Yes, sir. Yes. Now these are the special function registers which are related with the timer. So they are called as a timer register. And if you see the programming model of 8051, you will see these registers. You will see these registers. TH1, TL1, TH0, TH0. So for there are two timers. मैंने आपको बताया था when I was explaining you the block diagram of 8051, there are two timers or counters. There are two. Okay. Now yes. Yes. Now when you talk about the timer 0, now this timer 0 is of 8 bit. Oh, sorry, 16 bit. So this timer 0 is split into 8 bit TL0 and 8 bit TH0. Timer 1 is also of 16 bit, but it is split into TL1 and TH1. TL means lower 8 bit and 1 means timer 1 associated with timer 1. TH means higher 8 bit. 1 means associated with the timer 1. So 8 bit plus 8 bit gives you 16 bit. Timer 0 also TL0. 0 means associated with the timer and L for lower 8 bit, H for higher 8 bit. Okay. So timer 0 and timer 1 registers are they. TL0, TH0, TL1 and TH1. Okay. In the programming model, if you see carefully, TL0 is separate, TH0 is separate, TL1 is separate, TH1 is separate because they are all 8 bits. Now, there are special function register 2 more. Which are they? They are TCON, that is a timer control register, and TMOD, that is a timer mode register. And if you see, these TCON and TMOD are shared among timer 0 and timer 1. They are shared. इसलिए ये बहुत बड़ा दिखाया है. But what is the size of TCON? The size of TCON is 8 bit. What is the size of TMOD? The size of TMOD is also 8 bit. लेकिन ये बड़ा इसलिए दिखाया just to show you that timer 1 and timer 0 they share this TCON and TMOD register. Okay, so remember these are the timer registers or they are the special function registers. Can any one of you check in the programming model whether TMOD is bit addressable, whether TCON is a bit addressable, whether TL0 is a bit addressable, TH0 is a bit addressable, or TH1 or TH1? Please let me know whether they are the bit addressable or not. चेक करके मुझे बताओ फटाफट. So TCON is bit addressable. TMOD is not. TCON is bit addressable. What about TMOD? No. Oh, okay. What about TL0, TH1, ये वाले? No, sir. They are byte addressable. Okay, they are byte addressable. Can any one of you tell me the byte address of TL1? 8BH. Okay. Can any one of you tell me what is the byte address of TCON? 8H. Okay. And for TMOD? 8-9H. Okay. So this is just to confirm that you know the programming model and you know where they are residing in which byte address and which of them is a bit addressable. Okay. So we need to study these registers. So we will start with the TMOD. But before we start, I think you have taken the screenshot. I won't give you time to write it down, but you can take the screenshot. Okay, you can take the screenshot of it. Now directly we will go for understanding the register. Yes. Here now on the screen, you can take the screenshot or you can take the pic of this. Now here all of you. The timer related SFRs अभी हमने देखे. देखो TH0, TL0, TH1, TL1, TCON and TMOD. अभी हमने देखे. TH0 को हम क्या बोलते हैं? टाइमर 0 हायर बाइट.
उसका हेक्साडेसिमल एड्रेस या फिर बाइट एड्रेस इज 8C. ओके, देन TL0 टाइमर 0 लोअर बाइट, उसका बाइट एड्रेस इज 8A. TH1 is timer 1 higher byte. Similarly, timer 1 lower byte. Their corresponding byte address. TCON is called as timer control register, and TMOD is called as a timer mode register. Their respective byte address is 88, and here it is 89. Okay, so this is the registers, their description, and their respective byte addresses. Now we will start with the first register, that is a TMOD. So I want everyone to see this figure now. Do not draw because we don't have time. We will not draw. You will take the pic. Afterwards you can fare it down. Afterwards you will write it properly. You will draw this properly with the understanding. Now I'm going to explain you TMOD register. Are you all ready now to understand this? Now we are going to see this TMOD register. Now what is written here? This register is used to control the mode of operation of both timers. आपके जो टाइमर्स है ना, टाइमर 0 और टाइमर 1, ये डिफरेंट मोड्स में काम कर सकते हैं. जैसे हमने सीरियल में देखा, सीरियल कम्युनिकेशन में देखा, मोड 0, मोड 1, मोड 2, मोड 3, वैसे ही आपका टाइमर डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन में काम करते हैं. ईच बिट ऑफ द SFRs gives the microcontroller specific information concerning how to run a timer. आपका जो टाइमर है उसको कैसे रन करना है, कौन से मोड में रन करना है, that every information is provided by this each bit of the TMOD register. So this is a format of TMOD. This is the format of TMOD. Okay, now see the format of TMOD. TMOD आपको पता है 8-bit रजिस्टर है, तो 8-bit है 0 से लेके 7, और हर एक बिट का क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या फंक्शन है, we are going to see here. Now this 8-bit is further divided into this 4-bit is for timer 0, this 4-bit is for timer 1. Again I am repeating, this 4-bit is for timer 0, this 4-bit is for timer 1. Okay, then M0 M1, here also you have M0 M1. C/T bar, here also it is C/T bar, and this is a gate and gate. So we will see the individual function of every bit, okay. First we will start with this first bit, that is gate. We will start with the first this bit, that is the gate. अब ये gate का क्या importance है, we will see first. Okay, हम gradually बाकी के भी bits समझेंगे. Okay, so first we will try to see what do you mean by gate. All of you pay attention now. This is important. कहीं पे भी कुछ भी नहीं समझ में आया तो मुझे पूछो. Okay, now what is the 7th bit? Okay, 7th bit, ये समझ गया तो same thing is applicable for bit number 3 also. सिर्फ डिफरेंस क्या है, this is for timer 0 and this is for timer 1, यही डिफरेंस है, बाकी everything remains the same. So try to understand bit number 7, that is this bit, and see here what I am explaining you. When this bit is set, जब ये bit 1 होता है, timer 1 will run only. When this bit is 1, your timer 1 will start running. Timer will run only when INT1 bar, that is pin number P3.3, pin is high. Okay, now timer 1 will run only when INT1 bar pin is high. Now what is this INT1 bar pin? Now if you see the pin diagram of 8051, there you will see one pin, and this is the alternate function of port 3, P3.3. So INT1 bar pin. Okay, ये pin पे क्या है, इसका क्या importance है? Now this INT1 I have explained you. Whenever there is some interrupt coming from other devices to 8051, that will be interrupted through INT1 pin, through the INT1 pin. Okay, तो अगर कोई device को अगर 8051 को interrupt करना है, so that device can interrupt your 8051 through INT1 bar pin. Okay, now whenever the interrupt is coming at INT1 bar pin, that pin will be high. तो यहाँ पे क्या बताया, when your gate pin is 1,
the timer will run only when INT1 bar pin is high. So when there is some interrupt coming at INT1 bar pin, that time your timer will run, and provided their gate is equals to 1. Next here, when this bit is cleared, जब ये bit 0 रहेगा, timer 1 will run. When this bit is cleared, timer 1 will run regardless of the state of INT1 pin. आपका गेट अगर 0 है, that time also timer 1 will run, but regardless of the state of the pin. INT pin का क्या भी कुछ भी status रहने दो, timer 1 will run when your gate is equals to 0. Okay. Now further, TR1 in TCON register must be set 1 for timer 1 to run. अब यहाँ पे एक बात समझो, कभी भी मुझे टाइमर 1 को रन करना है, तो ये जो TCON रजिस्टर है, जो अब तक हमने पढ़ा नहीं है, हम टी मॉड के बाद पढ़ने वाले, उसमें एक बीट होता है, वो होता है TR1. TR1 का मतलब होता है टाइमर 1 रन. मेरे पास 2 टाइमर है, अगर TR0 रहेगा तो टाइमर 0 रन, और TR1 है तो टाइमर 1 रन. तो मुझे कभी भी अगर टाइमर रन करना है, तो सबसे पहले बात है कि TCON का जो ये बीट है वो 1 होना चाहिए, अभी मैं आपको बीट नंबर 7 पढ़ा रहा हूँ, और आपको पता है बीट नंबर 7 इज एसोसिएटेड विद टाइमर 1. So timer 1 के related I am explaining to timer TR1. So this TR1 is a bit which is present in TCON register, जो हम इसके बाद पढ़ने वाले टीमोड के बाद. तो आपको एक ही बात याद रखनी है कि आपका जो टाइमर है, अगर उसको आपको रन करना है, तो सबसे पहले TCON का जो TR1 बीट है वो 1 होना चाहिए. उसके बाद अगर आपका अगर गेट 1 है, तो आपका टाइमर 1 रन करेगा ओनली व्हेन योर INT1 बीट इज हाई. जब कभी इंटरप्ट आएगा तभी आपका टाइमर 1 रन करेंगे, और जब आपका गेट 0 है, तब INT1 का कुछ भी स्टेटस रहने दो, आपका टाइमर 1 रन करेगा. बट प्रोवाइडेड योर TR1 बीट इन TCON रजिस्टर शुड बी सेट एज 1. Okay. Now whatever I explained you for gate, the same thing will be applied for this gate also, but that will be the explanation with related to the timer 0. Okay. So gate 1, this gate and this gate, these bit is important to run your timer. Is it clear? Any questions you have for gate? If you have any questions, please ask, because this is important. You will not understand the other things if you are not understanding the TMOD register. TMOD register is important. Shall we proceed further? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अभी मैं जो एक बात बताने वाला हूँ, you please write down in your register now regarding the gate. ये तो आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिखो, लेकिन अभी मैं गेट के बारे में जो लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो लिखो. ऑल ऑफ यू राइट डाउन. गेट लिखो. यू कैन से गेट ब्रैकेट में लिखो पिन नंबर 7 और पिन नंबर 3, और लिखो स्टार्ट और स्टॉप कंट्रोल यूजिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. स्टार्ट और स्टॉप control using hardware or software. Full stop. When gate is equals to 0, स्क्रीन पे भी देखना आपको जो गेट के बारे में हमने लिखा था, when gate is equals to 0. So आपने क्या लिखा? When gate is equals to 0, start or stop of timer. When gate is equals to 0, start or stop of timer is controlled only by TR1 or TR0 bits. TR1 or TR0 bits. ब्रैकेट में लिखो in TCON register. अभी मैंने यहाँ पे TR1 और TR0 इसलिए लिखा क्योंकि आपने गेट जो लिखा उसके ब्रैकेट में आपने क्या लिखा, बिट नंबर 7 और बिट नंबर 3 लिखा है, इसलिए मुझे दोनों भी बताने पड़ेंगे. ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन. आपने क्या लिखा है?
when gate is equals to 0, comma, start or stop of timer is controlled only by, only को underline करो, is controlled only by, underline करो, only को, by TR1 और TR0 bits, ब्रैकेट में लिखा in TCON रजिस्टर, क्योंकि ये TR0 और TR1 बिट हमें कहाँ देखने को मिलेगा, TCON रजिस्टर में. फुल स्टॉप, फुल स्टॉप. while gate is equals to 1, while gate is equals to 1, while gate is equals to 1, start or stop of timer, start or stop of timer is controlled by, is controlled by TR1 or TR0, TR1 or TR0, as well as signal on, as well as signal on, as well as signal on. Can any one of you complete the sentence? As well as signal on. Can any one of you please complete the sentence? As well as signal on. You can refer the figure on the screen as well as the explanation. As well as signal on the INT1. yes, yes. As well as signal on INT1 bar, INT1 bar, और दूसरा कौन सा पिन हो सकता है? INT0. Yes, yes. INT0 bar. INT0 bar. If you see carefully the pin diagram of 8051, you will see there are two external interrupts. ये हमने पहले ही लिए थे. INT0 bar, INT1 bar. So INT0 bar is associated with timer 0. INT1 bar pin is associated with timer 1 pin. Okay, तो मुझे ये गेट में से आपको एक ही चीज बतानी है, और वो है, आपने सबसे स्टार्टिंग में सेंटेंस क्या लिखा था? स्टार्ट और स्टॉप कंट्रोल यूजिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. इसको अंडरलाइन करो 2-3 बार और इसको एस्टेरिस्क डालो, बिकॉज ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको अंडरलाइन करो 2-3 बार. 2-3 बार बोला, इसका मतलब दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. अभी मैं आपको बताता हूँ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है. ऑल ऑफ यू पे अटेंशन यार. All of you pay attention. All of you see on the screen now. All of you see in the screen now. When your gate is equals to 1, timer 1 will run only when INT1 bar is equals to pin is high. देखो, गेट 1 रहे या 0 रहे, टाइमर 1 रन करेगा. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपका TR1 है ना, दोनों केसेस में भी आपका TR1 1 होना चाहिए. वो दोनों भी केसेस में आपका TR1 1 होना चाहिए. ओके, गेट 1 रहे या 0 रहे, आपका TR1 1 होना चाहिए टाइमर को अगर रन करना है. दूसरी बात, आपका TR1 अगर 1 है और अगर आपका गेट 1 है, तो आपका टाइमर 1 रन करेगा ओनली व्हेन INT1 बार इज हाई. अगर ये हाई नहीं है तो आपका टाइमर 1 रन नहीं करेगा, इवन दो योर TR1 इज हाई. ओके, so don't you think this INT1 is the external interrupt? So can I say it is a hardware control? Your gate is equals to 1 is nothing but it is hardware control. और कौन सा hardware? INT1 bar. Now see when your gate is equals to 0. When your gate is equals to 0, आपका gate is equals to 0 है और आपका TR1 1 है, तो आपका टाइमर 1 रन करेगा regardless of your INT1 bar. Regardless of your INT1 bar. Okay, so it means that it is a software control. It is a software control. आपका गेट अगर 0 है तो INT1 का स्टेटस कुछ भी रहने दो, सिर्फ आपका TR1 1 चाहिए. आपका TR1 1 चाहिए. मुझे और एक बात बताओ, आपका TCON रजिस्टर बिट एड्रेसेबल है या बाइट एड्रेसेबल? आपने मुझे बताया था it is yes, Bit addressable. बिट एड्रेसेबल. यस, तो बिट एड्रेसेबल है.
इसका मतलब मेरा ये जो TR1 वाला जो बीट है ना टीकॉन का, उसको मैं इंडिविजुअली चेंज कर सकता हूँ. सो कैन आई से दिस इज बाय द सॉफ्टवेयर. आई मीन टू से दैट ये जो TR1 जो टीकॉन में है, और आपने टीकॉन बीट मुझे बताया कि बीट एड्रेसेबल है, तो सिर्फ ये टीकॉन रजिस्टर 8 बीट का है, उसमें से एक बीट जो आपका TR1 है उसको मैं 1 या 0 कर सकता हूँ. कैसे करना है? अगर 1 करना है तो सेट बी इंस्ट्रक्शन आपके पास है, और अगर क्लियर करना है तो आपके पास CLR इंस्ट्रक्शन है. ओके, so don't you think that I am using the software to make this bit 1 and 0, 1 or 0? So मुझे इसका समरी क्या है? इसका समरी ये है कि your timer 1 will run. See, only I'm talking about bit number 7. तो bit number 7 के लिए मैं अभी समरी बता रहा हूँ. Everyone please listen carefully. Timer 1 will run when your TR1 bit in TCON register is set. In both the cases, either your gate is 1 or 0. But when your gate is 1, it is actually hardware control. आपका TR1 1 रहने दो, आपका गेट 1 रहने दो, लेकिन अगर आपका INT1 बार 1 नहीं है तो आपका टाइमर रन नहीं करेगा. So can I say your जो भी सिग्नल INT1 पे आएगा एक्सटर्नली, that is controlling your run of your timer. So can I say when your gate was is equals to 1, it is hardware controlled? Yes or no? Yes or no? I want answer from you. Yes or no? Yes, sir. Yes. Now software control में क्या है? When your gate is equals to 0, irrespective of INT1 status, when your gate is equals to 0 and when your TR1 in TCON register is set, और TR1 सेट आप कैसे करते हो? सॉफ्टवेयर से इंस्ट्रक्शन के थ्रू. सो कैन आई से व्हेन गेट इज इक्वल्स टू 0, कैन आई से इट इज सॉफ्टवेयर कंट्रोल? यस और नो? Yes, sir. यस. तो अभी ये जो समरी मैंने बताई, इसको और मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ, इसको और मैं छोटा कर रहा हूँ. अभी दिस इज द लास्ट समरी. लिसन ऑल ऑफ यू. Your timer 1 will run when your gate is equals to 1. That means it is hardware control. Your timer 1 will run when your gate is equals to 0. That means it is software control. It means when your gate is equals to 1, hardware is controlling your timer 1. When gate is equals to 0, your software is controlling your timer 1. हार्डवेयर कंट्रोलिंग टाइमर 1 मतलब टाइमर 1 रन करो या फिर स्टॉप करो, हार्डवेयर कंट्रोल के हाथ में है. व्हेन गेट इज इक्वल्स टू 0, सॉफ्टवेयर इज कंट्रोलिंग योर टाइमर 1. टाइमर 1 रन करो या फिर टाइमर 1 स्टॉप करो, इट इज कंट्रोल्ड बाय द हार्डवेयर. डू यू अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ गेट नाउ? हैव यू अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ गेट नाउ? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes. Okay. So yes, I will take more 5 to 6 minutes. I will end up this P model. So you have understood now the function of gate. Now come to the function of P/T bar. एक भी समझ गया तो दूसरा भी समझ में आएगा. सिर्फ डिफरेंस है ये टाइमर 0 के लिए, ये टाइमर 1 के लिए. No one will leave. I will just take 5 to 6 minutes more. Now see here, what does this mean? Pay attention here. When this bit is 1, timer 1 will count event pulses on T1 pin, that is P3.5. When your this bit is 1, see it is C/T bar. T bar बोले तो Active. टाइम एक्टिव लो. यस, इट इज एक्टिव लो. तो अगर ये बीट 1 है तो it will work as a counter. When this bit is 0, it will work as a timer. Again I'm saying it is C/T bar. T bar means active low. When this bit is 0, it will work as a timer. When this bit is 1, it will active as a counter. अभी ये देखो यहाँ पे क्या, अगर ये 1 है, your timer 1 will count event on T1, that is P3.5. If you see the pin diagram of 8051, you have a T1, that is a timer 1. You have a T1. So that is used to count the external events. So can I say it is a counter mode? When this bit is 1, it is a counter mode. But when this bit is 0, see here,
When this bit is 0, the timer will increment every machine cycle. That is a timer mode. तो आपका ये जब 1 रहेगा तो आप टाइमर जैसे यूज करोगे, और अगर ये 0 रहेगा आप काउंटर जैसे यूज करोगे. अगर ये 0 है तो काउंटर मोड में क्या होता है, आप पिन नंबर T1 पे एक्सटर्नल इवेंट्स को काउंट करोगे, और ये अगर 1 है, सॉरी ये अगर 0 है तो टाइमर जैसा आप यूज करोगे. टाइमर में आप क्या हो रहा है, टाइमर में आपके इंटरनल मशीन साइकिल्स को आप काउंट कर रहे हो. दैट इज अ टाइमर क्लॉक विच इज इंटरनली जनरेटेड. और वो इंटरनली कैसे जनरेट होता है, रिमेंबर XTAL1 एंड XTAL2, क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 12 विल गिव यू द क्लॉक फ्रीक्वेंसी. और वो जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी वो आप इंटरनली काउंट कर रहे हो, या फिर आपका टाइमर इंक्रीमेंट हो रहा है. Okay, so in that case you are using as a timer mode. So remember counter mode and timer mode. This bit अगर 1 है तो counter mode, ये bit अगर 0 है तो timer mode. Is it clear to everyone? और एक बात याद रखना, अगर ये काउंटर जैसा मैं काम कर रहा हूँ तो I am counting the external clock pulses from pin number 3.5, that is a T1. And if I'm using as a timer, then this bit is 0. Then actually I am incrementing for every machine cycle. या फिर I am counting my internal clock pulses. Is it clear? Is it clear? Yes or no? Any one of you please acknowledge. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Now last 2 minutes. उसमें मुझे सिर्फ ये 2 दिखाना है, लेकिन वो डिटेल में नहीं बताऊंगा, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा. सिर्फ मुझे आपको उसमें यही बताना है, क्या बताना है, CS. Yes. M0, M1. Can you see the modes of timer? So I can use my timer in different 4 modes. Mod 0 is for what? 13-bit timer slash counter. Mod 1 is what? 16-bit timer slash counter. Mod 2 is what? 8-bit auto reload timer slash counter. Mod 3 is what? Timer 0 ... dash. ये हम सब बाद में लेंगे. ओके, मुझे सिर्फ यही बताना है कि these 2 bits set the mode of operation for timer 0. ये टाइमर 0 की क्यों बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैं बीट 1 की बात कर रहा हूँ, बीट 1 और 0 की, बीट 1 और 0 की. सी हियर बीट 1 एंड 0. तो टाइमर 0 को कौन से मोड में मुझे यूज करना है, आउट ऑफ 4 मोड्स, दैट विल बी डिसाइडेड बाय M0 एंड M1. और टाइमर 1 को कौन से मोड में करना है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय बिट नंबर 4 एंड 5. ओके, सो रिमेंबर these are the 4 modes which we will study in the next lecture. That we think we will study in the next lecture. For next lecture, do not remain absent. This is important. You can take the screenshot of this also. This is also important. I will explain each and every mode. Okay. Any more questions you have? So I have explained. You please take the screenshot or take the pic of this. So I have explained you T-mod register, each and every bit. सिर्फ मेरा बाकी है डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ टाइमर 1 एंड टाइमर 0. एक भी समझ में आया वो दूसरे पे भी लागू होता है. ओके, और ये होने के बाद फिर एक मेरा टाइमर कौन सा बाकी होगा, T-mod. ये बाकी के टाइमर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है T-mod और T-con. ओके, so this thing we will see in the next lecture. Any questions you have? Any questions, any queries? So for your test 1, already I have told you, you have module number 1 and module number 3. So that thing you have to study properly. So tomorrow's lecture is important. Don't remain absent. 2:30 to 4:30 I'll be engaging your lecture. So if you don't have any questions, you can leave. Thank you. Attendance हो गया ना?